Okay, so today's topic is error reduction and recovery. As previously runtime allocation and how implementation and operation means, we have discussed in this unit all about of symbol table. Now this is the time, this is error detection recovery, that is error handler. In unit for one only, when we study the introduction of compiler, we draw the diagram like this. Okay, these are the front end, these are the back end, like this. Okay, so about symbol table we have already studied how the operation with what are the operations, how we can implement the symbol table. Okay, what is the how the memory is allocated when it is actually when the program is actually performed, when the target code is actually how operating system provide the memory to the for the operations or the implementation for the symbol table. Now we'll studies that error handler, where this error handler will play its role. So as you can see ki both all the faces are attached to the symbol table, that means that all the faces uses a symbol table, and same with the error handler also, all the faces use the error handler as well. Okay, so if we talk about error handler, so we can say that is error detection plus error reporting plus error recovery. The all the three things is equals to the error handler. Means when the how the error detect, after detecting the error will report the error, and lastly will apply the recovery method for that error in any of the phase. And every phase have different types of detection mode ki we can say ki okay, and they have different types of error recovery method. So at compile time, basically we have errors in lexical phase, syntax and semantic. Okay, as you know, syntax is called as the heart of the computer, heart of the compiler. Why so? Because most of the things, most of the parser table हो गया, parsing के बारे में पढ़ना हो गया, all the things will perform under this syntax. So and this is the, you can say unit wise, if we talk about unit second, that is parsing, is one of the is the biggest unit of all the units. Okay, and important one also as the examination point of view. Fine. So now we'll see, first of all we'll go through this table, what is this table is. So the table is basically that is recovery methods. Actually we have 5 recovery method, that is panic method, freeze level, error prediction, global prediction and using symbol table. And we'll see that in these are the in these lexical, syntax and semantics. So when these method can be applied after detecting the error. For example, you can see the panic method can be applied to lexical, syntax but not in semantic, phrase level only in syntax, error prediction syntax, global prediction syntax and symbol table. Using symbol table, how we can recover the error, that will only happen in the this semantic phase only. And you can see most of the method are applicable to the syntax one, and panic method is on the lexical. Fine. So now we'll see how these recovery method and how, first of all, how we can detect in the phases. So as you can see that in lexical phase, what are the you can say reduction, you can see that there is the error. So first one is exceeding length of identifier. What does it means? That sometimes what happen, that every language has some limitations. For example, in C, the word limitation for this in some, that is declaration, is that only 100 or 101, I don't remember clearly. So every language has some limitations. So if you cross this limitation, so it will give you the error. Absence of illegal character, same the thing as in this exceeding length. Every language has some library in which we have variables, or the, you can say, character which we can use. For example, in C, if we use this dollar, so it will say illegal character. Unmatched string, like if we started colon when we forget to close it, or we have closed but we forget to start it. So these types of errors are come under the lexical phase error. Okay, and some examples also are given. For example, this is a simple C program, and if we say int $8, so it will give not valid.
it will give not valid. So and now how we can now recovery method, will see how the recovery will work. See panic method क्या करता है आपका, because as you see only panic method is there, what it will do, it will scan one by one character and give token, okay, and give token as it आप यहाँ पर देखेंगे, मीन्स ये तब तक स्कैन करता रहता है जब तक इसको कोई नेक्स्ट कॉमा और कुछ सेमीकोलन नहीं मिल जाता. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो इंट a 5b एंड सम, और यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज $and z. तो व्हाट इट विल डू इन पैनिक मेथड, it will detect like this, int a, okay fine, comma 5b, if here it is error, okay, if here it is, because 5b will be discard ना, so it is a error, okay, so what will do, वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, मतलब 5 इज अ एरर, फिर देखेगा b आ गया इसके साथ, दैट विल बी एरर. तो अनटिल एंड अनलेस ये रुका रहेगा तब तक इसको नेक्स्ट कॉमा नहीं मिलता. अगर यहाँ पे मैं कॉमा नहीं लगाती हूँ एंड इट इज कंटिन्यूस सम रहता है, तो इट विल ऑल, ये जितना भी पूरा रहेगा इट विल कम्स अंडर योर, दैट इज ये आपका क्या रहेगा, रिकवरी, यू कैन से एरर काउंट करेगा और रिकवरी मेथड में आता जाएगा. ठीक है. सो अब when it find the that call that is comma, so it will gives information about this, and again it will scan some, then again it find $, it find it a C program and it's used. तो then again जब तक इसको सेमी कॉलन या कॉमा नहीं मिलेगा तो it will comes like error for it, okay, it will give indication to you that you have used some unlegal character, और आपने सेम मतलब टाइप के जो आपके डाटा टाइप सेम टाइप के मतलब दो डिफरेंट डाटा टाइप साथ में यूज़ कर रखे हैं, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज़ पैनिक मोड. और कोई भी यहाँ पर अगर आप बात करें किसी और की, तो इट विल पैनिक मैथड ही सिर्फ लेक्सिकल उसमें यूज़ होता है, बाकी फ्रेज लेवल रिडक्शन दे आर नॉट यूज्ड. ओके, सो नेक्स्ट विल गो टू सिंटेक्स फेस एरर में क्या क्या रहता है. फॉर एग्जाम्पल मिसिंग पैरेंथेसिस, सी दीज आर नॉट ऑल डिफाइंड, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, बट दीज आर द मोस्ट प्रोबेबली हैपन जो होते हैं. ओके, सो दोज आई हैव टेकन एज एन एग्जाम्पल, लाइक मिसिंग parenthesis like hello, here ये this bracket is missed, तो this comes under your syntax and मतलब this will error. Missing operator that means a plus b, अब now what is this, plus है, sign है, what is this, so this is missing operator. misspell keyword, switch ch, now misspell switch, अब देखो यहाँ पे SWITCH होता है, बट ये क्या है CTH. ओके, देन कॉलन इन प्लेस ऑफ सेमी कॉलन, लाइक कॉलन अगर हम प्लेस करते हैं यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाता है, बट कॉलन प्लेस्ड है, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस हो जाए ज़्यादा. सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ एरर जो रहते हैं वो आपके सिंटेक्स फेस के एरर होते हैं. अब इनके लिए जो रिकवरी मेथड है, यू कैन सी, हम पैनिक मेथड हम पढ़ चुके हैं कैसे होता है. नेक्स्ट है फ्रेज लेवल, एरर प्रोडक्शन हो गया, और ग्लोबल प्रोडक्शन. ये 4 मेथड हम अप्लाई करेंगे. अब देखते हैं कैसे कैसे होते हैं. सो रिकवरी पैनिक मेथड इज सेम, जैसा आपका सिमिलर लेक्सिकल फेस एरर में रहा था, सेम वैसे ही आपका वर्क करेगा. स्कैन करेगा आपका पूरा, जब तक उसको कॉमा या सेमी कॉलन नहीं मिल जाता तब तक वो उसको एज एन एरर लेता चलेगा, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा था. इजंट इट सेम भी रहता है. नेक्स्ट है आपका फ्रेज लेवल रिकवरी. इसमें क्या होता है, व्हेन पार्सर encounter an error, it perform necessary action on remaining input and parse rest of input. Yani what will happen in the phase level, you can say it is little much better than panic mode. Whenever the error will come, so what will do, you can see the definition also, whenever a parser encounter an error, it perform necessary action, वो उस पर necessary action perform करेगा, whatever जो भी रहेगा, and जो remaining जो आपका input रहेगा उसको वो एंड ऑन द रिमेन एंड पास रेस्ट ऑफ इनपुट, और जो बचा हुआ आपका इनपुट रहेगा उसको पास कर, मतलब इट वॉन्ट स्टॉप फॉर कॉमा एंड सेमी कॉलन. नेक्स्ट एरर प्रोडक्शन, add extra grammar production and make an augmented grammar and pass the input. अब ये वाला आप देख सकते हो, जब हम CLR करते हैं हम एक एक्स्ट्रा augmented grammar यूज़ करते हैं, दैट जो भी आपका स्टार्ट सिंबल है, S इज इक्वल्स टू आपका S एक स्टार्ट सिंबल है, तो व्हाट विल बी से एक augmented grammar हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हम पार्सिंग टेबल में उसको काउंट नहीं करते हैं, इजंट इट, जब हम I1 I स्टेट्स बनाते हैं पार्सिंग टेबल के लिए. तो इस ये मेथड आप कंपेयर अगर आप करोगे तो थोड़ा सा और बेटर है पार्स लेवल से, क्योंकि ये क्या करता है,
है, जैसे ही एक उसको क्या मिलता है, पार्सर जैसे इनकाउंटर करता है ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा ग्रामर प्रोडक्शन लगाता है उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और पास कर देता है इनपुट को। फाइन। नेक्स्ट इज ग्लोबल करेक्शन। एक्चुअली ये थोड़ा सा बिकॉज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से और हायर स्पेस की वजह से ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, द पार्सर एग्जामिन द होल प्रोग्राम एंड ट्राइज टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट मैच फॉर इट विच इज एरर फ्री। बिकॉज आप देख ही सकते हो डेफिनेशन से पढ़ के पता चल रहा है, ड्यू टू विच ये क्या रहता है इसमें, बिकॉज ऑफ हाई स्पेस, क्योंकि वो मैच ढूंढ रहा है, आप कितना बड़ा आपका प्रोग्राम होगा, क्या आपका कोड है, टारगेट कोड है, so it's really very difficult to implement this one as in practical. Okay. नेक्स्ट आपका आता है सिमेंटिक फेस एरर। सिमेंटिक फेस एरर क्या है, इसमें कौन कौन से एरर्स आते हैं, ये हमने पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर कि इसमें हमारा सिर्फ सिंबल टेबल यूज़ करके हम एरर रिकवरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स लाइक जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, यू कैन सी दिस वन, दिस इज इंटीजर ए एंड दिस इज एरे बी। अब यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी, फाइन, दिस इज इनकम्पेटेबल बिकॉज ये आपका इंट ए 10 इज इक्वल टू बी, मतलब दिस इज नॉट इन दिस विल नॉट वर्क, ओके। और दिस वन ऑल्सो इंट ए बी देन सम इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। सो लाइक दीज टाइप्स ऑफ एरर्स जो आपके रहते हैं जब आप ऑपरेंट इनकम, मतलब आपने ऊपर उसको इंटीजर का बोला, एक को आपने डाटा कुछ और करेक्टर का बोला, आप उसको ऐड कर दो, इक्वल टू कर दो, तो इनकम्पेटेबल ऑपरेंट्स, ठीक है। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल ऑल्सो, दिस इज आई थिंक डोंट नीड टू डिफाइंड ऑल्सो, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, नॉट मैचिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट विद फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ओके। सो जब ये टाइप की आपकी एरर्स आती हैं तो विल यूज़ द सिंबल टेबल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सिंबल टेबल में देखते हैं जब इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ ऑपरेंट्स आते हैं तो विल्स, बिकॉज इसकी जो एरर्स आती हैं वो कैन बी सॉल्व बाय द सिंबल टेबल। तो इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ ऑपरेंट आएगा तो हम उसका टाइप किस में देखेंगे, विल लुकअप इन द सिंबल टेबल, वे हम लुकअप लगाएंगे उसका, ठीक है। अब जैसे का मैचिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट विद फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, तो हम स्कोप वगैरह देखेंगे, ठीक है। क्या रहेगा, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। सो इट्स लाइक कि इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए जब ये एरर आएगी और हम सिंबल टेबल से उसको रिजॉल्व कर सकें, बिकॉज सिंबल टेबल क्या है, एक तरह का एक बॉक्स है हमारे पास जो सारे वेरिएबल्स की, ऑब्जेक्ट्स की, फंक्शंस की, जो भी हम उस कोड में यूज़ कर रहे हैं उसको, उसकी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। जैसे जैसे हम उसमें न्यू फंक्शन कुछ भी यूज़ करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे, वेरिएबल यूज़ करेंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करेगा। सो जो ये एरर्स हैं ये आपके सिंबल टेबल रिकवरी जो है इन एरर्स की वो सिंबल टेबल की हेल्प से हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 4. यूनिट 4 इज योर completed. इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स विल स्टार्ट द यूनिट 5 दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।